Assalamualaikum. Just waiting for Nusha to give me a go-ahead for my presentation and then we'll start. But while we wait for the presentation to be switched on, I'm really grateful to everyone who's taken their precious time off today for attending this conversation, particularly to Honorable Mr. Aisha Malik and to Justice Nasra Iqbal Sahiba. She's gone to say her prayers. She'll be back with us. So it really means a lot to have these two very inspiring female justices sitting with us. And I know you don't really like the prefix of female, but it's important to emphasize it at this point in time because unfortunately, it's not mainstreamed as such, and we'd like to see that become the norm. So your presence here today really makes the point even stronger. And it had been a dream to explore, the factors that underlie the disparity in the justice sector. And ever since I was a student, actually, I wanted to understand that where do the women go? Like so many, class fellows of mine, they're doing so well in the, exams and everything. But where are they when you, go out into the profession? Where are they in the justice sector? I don't see them around. So that has pinched me and prompted me, and I'm pretty sure that lots of law students sitting here, and I hope that lots of law students sitting here also, have questioned this at various points in their life as to where are the women. And I hope not just the women, but the men have also questioned that. But if not, then maybe this is the time that they can start doing that. So when we got the opportunity to do this study, and for that I am totally and truly honored to Dr. Adnan and his team from United States Institute of Peace for making this possible, for making this dream a reality. And so when we had the opportunity to do this and to put this together, to work on something that I had been longing to do, I had three objectives. And the first of which was that it has to be rooted in the local context. I want to go and speak to our people and to actual people and see what their experiences are and to learn directly from them. I don't want to go to them with any preconceived notions. I don't want to go to them with any of my foreign education and any ideas that I may have through secondary resources. I wanted to find out from their mouths and their experiences and their lives itself as to what these structural barriers and gaps were. So that is why the study is, it is more of a narration and more of, there's a lot of text in it, but there's also a lot of data. So I mean, that's why it's interdisciplinary as well. But essentially the idea was that we wanted to take a holistic approach. And holistic approach से मतलब ये है कि हमेशा किसी एक फैक्टर को फोकस करके उसके ऊपर बात हो रही थी. And we wanted to see the interrelationship as to how, from the time you step into a law firm or a law degree program for that matter, and you decide to do law, and then what happens with you as a female law student? What does your family say? Do they support your decision to go to court kacheri or not? And what do your teachers tell you? कि criminal में मत जाएं, आप family कर लें, in-house counsel. So like this whole thing, eventually, like after so many years, we realized that all of this is actually connected to the progression and advancement in the profession. So it's not just ends with the law school or starts with the law firm. It then sort of impacts and hinders your ability to advance in the profession as, for example, an advocate Supreme Court. So if you're not going to the law firm, or if you are going to the law firm but not going to the courts, your attendance is not getting marked in the courts. You're not getting, you don't even apply for a license for the longest period of time because you don't understand the value of it. There's not enough information. So all of this was actually interlinked. And that web that was in my mind, I was like, okay, this can't be done in silos. This needs to be put together, and it's a complex kind of web of, stories put together. And my Khala, Dr. Rubina Sehgal, when I shared the proposal with her, she's not with us today, but this is really an honor for me to dedicate this work to her because I've learned everything from her. And she's the reason why I know what to write, how to write. And this particular proposal, the research proposal for this study, was one of the last, guidance that I received from her. And she looked at the proposal, she said, it's really good, but it's really huge. How are you going to put it together
in this amount of time and this amount of resources, and like how are you going to all bring it all together? And I said, no, but I cannot do it. I can't just focus on the judiciary, and I can't just focus on the law firms, and I can't just look at the prosecution. Like it's just so interconnected, all of these structural barriers, that one thing has an impact on the other. So then she blessed me, and this went through. So the local context, the interdisciplinary approach, and the best practices and way forward globally were our context. That was the lens that we were looking at it with, and of course, with this, the gender lens was obviously also there. So that's why you might find that this is a very this may be a study that's all over the place, but we've tried to compartmentalize it as much as we could, and so far it focuses on Punjab, particularly 3 cities in Punjab, but it can be scaled up for an inter-provincial analysis, and I would really like to at some point see whether what we learned from Punjab is actually something that applies to Sindh as well, or KP or Balochistan, and see what the comparison looks like. But for now, this is Punjab, and so in our context, essentially, and I would just sort of going to briefly touch on this, that whatever we have done, like whatever legislative gaps or constitutional gaps or structural impediments that we've highlighted, we need to look at them in our overall context of what actually informs our justice sector. And these are, of course, I don't know if this is working. Thank you. So our context, of course, our laws, our justice sector, the system that we have is informed by these various sources and various factors that make up our justice sector, that make up our legal processes. And also we have the Islamic law and faith, we have our international obligations, we have the Constitution of Pakistan, and of course there's a colonial past, and lots of the laws on our statute books are still from the times of the British era. Peace processes and legislations are still informing our context, and of course there have been amendments over the years, but these are the various sort of factors within which we have to see what we have inherited. And in this context, we also have to see how much of a role did women actually play, because all of this history, all of this background has brought us to the point that we are today, which includes our culture and traditions, as well as the competing ideologies and rights movements, of which Women's Action Forum is, of course, a very prominent factor, because their struggles have informed into what mainstreaming women's rights and representation and role is. So all of this has actually contributed to our struggles. Now, as far as women are concerned and their representation is concerned, their earliest struggles were for political representation, and this goes way back to before partition. So during the 1930s, when you had the roundtable conferences, even then women were fighting for reserved seats in the parliament, and at that time the demand was 10%. But in 1954, when the first Constituent Assembly was being debated and discussed, they settled for 3% seats for women. But even today, in 2022, only 20% of our parliament is made up of women, and of which 18% are on reserve seats. Only 2% representation is on general seats. So that's where we are, and this is actually the issue that I want to highlight. That इससे 2-3 बातें पता चलती है. एक, affirmative action ज़रूरी है अभी भी, आज भी, because ना हो तो फिर 2% पे आपकी representation. And that's, given that women's we stand at almost half the population of this nation, these are not very encouraging statistics, right? So that should tell you the need for affirmative action, the need for making these measures, putting in place these measures, so that until we reach a point where the society and the structures are improved to a point where on general seats we can have that sort of representation or better, we will need that kind of structural interjections or interventions to make sure that there is that voice. Can we have the next slide, please? So yeah, here I wanted to talk to you about representation. It's a word that we often throw around, but we really need to understand that representation, and like Lisa, my colleague, also mentioned, that it's not just enough to have a seat at the table. Representation has 2 elements.
It entails quality and quantity both. Quality meaning the voice, and quantity meaning the seat. And these are somehow like they can potentially mutually reinforce each other as well. So you have more seats, you'll have more voice. You have more voice, you'll have eventually, hopefully, more seats as well. So both these elements, having a voice as well as a seat, are essential for fair representation. And this is another term that we are going to discuss. So there's representation and then there's fair representation. And we'll see, can you click it? Yeah, so we'll see what is missing from our justice sector. Can we have the next slide, please? So this is the data from the state of women's representation in law. This is the baseline data that I collected last year with the Ministry of Law and Justice project that I did. And in that, this baseline data was compiled through official sources with the help of the Ministry of Law and Justice. And this gives you the current state of representation of women. I haven't added the number of male percentage here because that's something that you can easily deduce. But essentially, this is what our state of women's representation looks like. In the subordinate courts, we are 15%. In the higher courts, we are barely 5%. And if you just compare the percentage of women inter se between the subordinate and the higher courts, then only 1% of women make up judges or are represented in the superior judiciary, which includes the High Court and the Supreme Court. Prosecutors, you just have 12%. Prosecutor General, 0%. Only one DPP was, I think, female in the Punjab Commission of Status of Women report. There was only one female who has been appointed as a DPP, but not as a Prosecutor General. Advocates also we stand at 12%, with only 4% of women being advocates Supreme Court. So, जो मैं progression की बात पहले कर रही थी कि everything is interlinked, कि अच्छा एडवोकेट्स तो बन गए लेकिन फिर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 4% क्यों है, क्या वजह है कि वो उससे आगे नहीं बढ़ पाती, वो भी सारे इसके अंदर हमने डिस्कस किया। प्रोविंशियल बार में ये तो एक वाहिद ऐसी बॉडी है प्रोविंशियल बार पाकिस्तान बार जो इलेक्शंस के थ्रू आप इसमें लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे कम रिप्रेजेंटेशन है। तो बार काउंसिल में प्रोविंशियल बार में फिर 2% है, वो भी इसलिए क्योंकि एक साहब जो जीते थे अपनी सीट 2020 के इलेक्शन में वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, तो फिर मिस रुश्ता लोधी एडवोकेट रुश्ता लोधी थी, वो नेक्स्ट थी इन लाइन, तो उनको जगह मिली थी। सो ये हालात है पंजाब में। पाकिस्तान बार काउंसिल, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड अटॉर्नी जनरल, 0% women, 75 years of our history, no representation। तो ये डेटा आपके सामने, स्टूडेंट्स का डेटा अवेलेबल है ही नहीं, हमने बहुत कोशिश की पर हमें नहीं मिल सका। और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में अगर देखें तो 128 ईयर्स की हमारी तारीख है, जिसमें सिर्फ 4 खवातीन कुल 5 बार प्रेसिडेंट बनी, सदर बनी। उनमें से एक जस्टिस नासरा भी है, वो इधर है नहीं अभी मौजूद, लेकिन शी इज़ वन ऑफ दोज 4 women। एंड फीमेल लॉ फर्म हेड्स नेग्लिजिबल, पार्टनर्स इन जो फीमेल लॉ फर्म में पार्टनर्स होती हैं वो भी नेग्लिजिबल अमाउंट है। अब थोड़ी इस चीज़ में हम ट्रेंड देख रहे हैं, लॉट्स ऑफ women are setting up their own independent practices and all, but still the number is negligible, but we don't have data, so I don't have an exact percentage to give you, but it's negligible. Next slide, please. So what is representation, and more importantly, what is fair representation and why is it important in the justice sector? I'll deal with the last question first. So if you read the study, you will find out that these are some of the reasons that this is actually coming from a lot of secondary research that we did. In lots of other countries, the similar issue of women's representation was raised, and over there, these were the factors that were concluded as to why it's important. Because if women are not included in leadership roles, or you don't see them as judges, as prosecutors, as in the police, for example, then what happens is that these key forums through which the rights are enforced, if they don't include the gender diverse voices, what happens is that your jurisprudence and the profession fails to benefit from their lived experiences. So it's not just our loss, but it is a loss for the system as a whole. आपकी jurisprudence का loss है ये, आपकी profession का itself एक failure है, and it shows that, is it dead?
Oh, it's working. Thank you. Yeah, so when you don't have systemic checks in place, when you have just one, individual women breaking or shattering the ceilings, and you don't really have that systemic structure in place, then essentially what happens is that it shows you that the system is capable of ignoring voices of women or other marginalized groups for that matter. Of course, the study is focused on women, but the same can be said of other marginalized groups as well. Then there were several studies by Professor Norma Wickler, this was in Canada, and they show that male judges tend to adhere to the traditional roles of women and the gender-based myths. They harbor them more. And this is not something that I'm speaking on, it's not a Pakistan-based study, this is a study that was based in Canada. But these were some of the factors that, we figured that, okay, this is what's coming forward. So in terms of whether something is progressive or not, I can't say whether that's true for Pakistan or not, because this is something that we still haven't explored here. But these are the global sort of comparisons that we made and realized that, okay, these are the factors that are coming up more and more. And as Bertha Wilson in her very important article says that, would it make a difference to have female judges, says that women judges, through their differing perspectives on life, can bring new humanity on the decisions, on the jurisprudence, and we've seen the impact of that. The two-finger test decision is right in front of you, and then we saw how Honorable Justice Mansoor Ali Shah then reciprocated that in his judgment later on, after the two-finger test judgment was passed. So we see that, yes, this is something that in our context also we have witnessed that. So all of these factors are there, but the one that stood out the most for me was that feminist scholars have also argued that the presence of diverse views can play a role in offsetting partiality inherent in homogeneity and introduce neutrality and impartiality into the justice system, that such diversity then becomes a tool for impartiality as opposed to a factor that erodes impartiality. So वो जो एक क्रिटिसिज्म होता है कि जी अगर आप एक तरह के तबके का या एक ख़ास किस्म के बंदे को लेकर आएंगे तो फिर वो उसके बायस आ जाएगी उसके अंदर, वो एक्चुअली उसके अगेंस्ट आर्ग्यू करते हैं और कहते हैं कि नहीं, वो बायस एक्चुअली ऑफसेट करेगा उस इनहेरेंट होमोजेनाइटी को और पार्शियलिटी को जो एक होमोजेनाइज क्लास के पर्सपेक्टिव से आते हैं. सब अगर एक ही तरह से सोचने वाले लोग बैठेंगे तो फिर आप जाहिर है वो भी तो एक बायस ही फिर रिफ्लेक्ट करेंगे ना. सो दैट डाइवर्सिटी दैट कम्स इन एक्चुअली ऑफसेट्स दैट पार्शियलिटी जो होमोजेनाइटी के अंदर इनहेरेंट होती है. So this was a very interesting factor that I came across during the study. I am not too sure if this is something that is true for our local context as well, because again ये वाली सारी जो थी हमारे secondary उसमें से आ रही थी. But this is very interesting for me that diversity is actually a tool for impartiality, not vice versa. So what is representation? There's not much or there's not enough that has been said about the concept as such. We all know that it's a term that has mostly been used in the context of political theory and the form of government, where it is understood to reflect the indirect representation of the constituents who relinquish their rights to participate directly in the government. So in that context, political science में हमने इस term को ज़्यादा देखा है. लेकिन ज़ाहिर है जब आप जुडिशरी की बात करें फॉर एग्जांपल, देन ऑफ कोर्स आप यू कांट रियली से दैट अप्लाइज हियर. सो रिप्रेजेंटेशन जस्टिस सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा मुख्तलिफ होगा. इट वोंट बी द सेम एज इट मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंसेज. द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वर्क ऑन दिस इज हाउएवर बाय हैना पिटकिन, who in her book The Concept of Representation takes a more linguistic approach to this, and basically she says that there's just one broad meaning of representation जो हमेशा से एक ही चलती आई है, and that is one meaning जो आप हर context में apply कर सकते हैं. And she says that representation as a concept is that something not present is considered as present in a non-literal sense. So although oversimplistic, this formulation of the word representation is helpful when we speak of it in the context of the justice sector, because जो कुछ भी है ठीक है, हमने कोई अपने राइट्स रिलिंक्विश नहीं किए जजेस को, या हम उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते, बट जो
judges are involved with the interpretation and application of law on matters that impact all of us. Sometimes fundamental rights का सवाल है, constitutional matters जाते हैं, so एक public element आ जाता है, उसी फिर they are resourced and financed through public monies, and of course, you know, historically they've comprised of men from upper class backgrounds, leading to a de facto hegemony of one class or gender over the decisions that can potentially impact all citizens. So that is why it is important that some concept of representation and breaking that homogeneity वाली sense में वो होना चाहिए. So something not present is considered present in a non-literal sense. This was the concept, but our findings suggest that our people interpret that to mean quantity in terms of the number of people from their communities. जब वो increase करेंगे तो उनको लगेगा कि representation हुई है. So this is ultimately the conclusion of that our people, जो हमारा local context है, वो representation को इस तरह define करते हैं कि it's quantifiable, यानी measurable presence of underrepresented persons by the ratio and proportion of the populace. So जो मतलब जिनको आप measure कर सको in terms of numbers. So it's a very mathematical conclusion that we have reached, but this is what our research has मतलब the people that at least जो हमारा sample था उसके हिसाब से ये होती है. Fair representation क्या होती है? Let's look at that. So if representation is quantifiable presence, then fair representation is actually based on the idea of fairness and justice that accommodates the idea of proportional representation, but also balances the historical and structural inequities with the practical limitations so that fair representation is actually proportional representation. So in our context, that would be 50%. So if somebody asks me what is fair representation in the justice sector, at least 50% representation of women in all these is what is fair representation. Where do we stand? 15%, 5%, 2%, 0%? And where do we have to go? अगर अभी subordinate judges 15% है तो हमें 35% और चाहिए. अगर हाई कोर्ट में 5% है तो हमें 45% और चाहिए. अगर सुप्रीम कोर्ट में 2% है तो हमें 48% और चाहिए फॉर इट टू बी फेयर रिप्रेजेंटेशन. ये तकाजा है फेयर रिप्रेजेंटेशन का कि 50% रिप्रेजेंटेशन होगी तो बात बनेगी. और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरे 50% चाहिए इसमें मतलब ऑब्वियसली. और ये सब के लिए जो है आपको इंटरजेक्शंस करने पड़ेंगे, कॉन्शियस स्टेप्स उठाने पड़ेंगे. ये एक नेचुरल प्रोसेस से नहीं होगा, इसके लिए स्टेप्स उठाने पड़ेंगे. सो अब ये तो था पहला पार्ट हमारी स्टडी का जिसमें हम फेयर रिप्रेजेंटेशन को एज अ कॉन्सेप्ट बात कर रहे थे कि वो होता क्या है, व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज़ फेयर. आई होप दैट यू नो आई हैव बीन एबल टू कन्विंस यू that it means 50% representation. Now we'll look at the gaps, and these are those gaps जो वो 50% होने नहीं दे रहे. कब से हम लगे हुए लेकिन अभी तक हम नहीं कर पाए, वो gaps हैं. तो हमने दो पार्ट्स में इन gaps को देखा. हमने लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गैप्स भी देखी कि वो गैप्स हैं जो हम बेसिकली कागज़ के टुकड़े पे अमेंडमेंट या रिफॉर्म लाने से एड्रेस कर सकते हैं. यानी एक लॉ रिफॉर्म में अमेंडमेंट ला के या कोई डायरेक्शन इशू करके ये वो गैप्स हैं जो कागज़ के टुकड़े के ऊपर चेंज लाने से आप इजीली इंश्योर कर सकते हैं. लेकिन जो ज़्यादा मुश्किल जो सोशल कॉन्टेक्स्ट से आ रहे हैं वो स्ट्रक्चरल और इनविजिबल गैप्स है जो समटाइम्स एक्नॉलेज ही नहीं होते कि गैप्स हैं, जो समटाइम्स कोई कंसिडर भी नहीं करता कि अच्छा ये भी मतलब एक इशू है. वो बस कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल गैप्स पे ही बात ख़त्म कर देते हैं कि जी आपको आर्टिकल 25 में इक्वालिटी दी तो है, अब आपको और क्या चाहिए. सो इट्स नॉट इनफ एंड इट्स नॉट सफिशिएंट कि आप उसको वहाँ तक छोड़ दें. एनालिसिस आपका इनकम्प्लीट रहेगा. जी आई नो मैम यू हैव टू लीव, सो इफ़ यू वांट टू एट एनी पॉइंट प्लीज़ फील फ्री टू. आई अंडरस्टैंड. Oh, अच्छा. So thank you so much for correcting me. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. So legal and constitutional gaps और ये structural visible gaps दो लेंस से हमने इसको देखा. Then we have the next slide, please. और ये है वो standards and principles जो हमने अपनी जितनी भी global treaties और
कॉन्टेक्स्ट था, इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो मैंने आपको शुरू में ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट बताया, उन सब में यानी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ले लें, हमारे आप इस्लामिक लॉ ले लें, आप हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस ले लें, उन सब के अंदर ये निचोड़ है, ये वो स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स हैं जो लेंस हम चाहते हैं कि अप्लाई किया जाए हर उस, मतलब ये बेंचमार्क है और हमने गैप्स को इनके तकाजे में देखना है कि लाइक अफर्मेटिव एक्शन नहीं है तो वो एक गैप है, इक्वालिटी इंक्लूजन से, ये हमारे बेंचमार्क्स हैं। इसके लेंस से, इसके कॉन्टेक्स्ट से हमने देखा कि कोई चीज़ गैप मतलब है कि नहीं, हाउ क्लोज वी आर टू मीटिंग दीज स्टैंडर्ड्स और हाउ फार वी आर फ्रॉम देम। सो दिस इज what was the driving sort of lens that took us. So there's transparency there's non-discrimination, there's equality, inclusion, equal representation, decision-making power, and all of these have been deduced from all those various pieces of legislation, constitution, international obligations, international best practices in other countries. ये है वो principles जो सभी apply करते हैं। अब जो लेजिस्लेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गैप्स हैं वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये वो गैप्स हैं जो हमारी फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए या किसी कानून में कोई तरमीम के ज़रिए चेंज करने से वो चीज़ें एड्रेस हो जाएंगी। अब इसमें गैप्स क्या निकले, उसको स्टडी के अंदर भी डॉक्यूमेंटेड है, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड टू मच टाइम रीडिंग आउट ईच एंड एवरी वन, बट जस्ट टू गिव यू अ फ्यू एग्जाम्पल एंड जस्ट से कि जिस तरह हमारे जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का फॉर एग्जांपल तरीक़ेकार है या जेसीपी की कॉम्पोजिशन है या हमारी पावर टू नॉमिनेट वो वेस्टेड है किसी एक फ़र्द के अंदर बजाय कि उसका कोई और प्रोसेस हो। तो ये सारे वो गैप्स हैं जिनकी वजह से हमारी नॉमिनेशंस और अपॉइंटमेंट्स और रिक्रूटमेंट्स के अंदर उस तरह से इंक्लूजन पॉसिबल नहीं होती जिस तरीके से होनी चाहिए। एंड इसके साथ हमें क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स you can all agree or disagree with these, you can come up with your own actions that you want to propose, but these are the ones that we've deduced from the study after speaking to around 100 participants of that survey. So उनके नज़दीक of course रिजर्व सीट्स होनी चाहिए, जुडिशरी में भी होनी चाहिए और जितने और इदारे हैं, जेसीपी हो गया, आपकी प्रोसिक्यूशन है, सबके अंदर रिजर्व सीट्स होनी चाहिए। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपके जो सिविल जो आपकी बेसिकली सबॉर्डिनेट जुडिशरी है उसमें यू हैव द डिसेबिलिटी कोटा एंड यू हैव इस तरह के आपके कोटे हैं, लेकिन विमेन का कोई कोटा नहीं है उसके अंदर। सो इट्स नॉट समथिंग न्यू और हम कोई नई चीज़ नहीं कह रहे हैं और हम ये भी नहीं कह रहे कि कोटा इज़ द ओनली सोल्यूशन, इट्स प्रॉब्ली जस्ट अ टेम्परेरी थिंग। आई मीन दिस वी नीड टू गो बियॉन्ड कोटाज एंड इवेंचुअली मेक इट पॉसिबल फॉर विमेन टू कम फॉरवर्ड एंड अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स टू कम फॉरवर्ड। साथ ही बहुत इंटरेस्टिंग जो सजेशन थी वो ये थी कि अभी सीनियर कोर्ट्स में यानी सुपीरियर जो जुडिशरी है वो नॉमिनेशंस के ज़रिए उसकी जो है सामने आती हैं जो नामजदगी है कैंडिडेट्स की। सो इसको अगर हम एप्लीकेशंस बेस्ड मॉडल कर दें, यानी कि हम अगर कोई वैकेंसी आई है तो उसके अगेंस्ट हम एप्लीकेशंस इनवाइट करें फ्रॉम द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दोज पोजीशंस, तो it might actually democratize the system and make it possible for people who are currently not aware कि कोई वैकेंसी है या कंसिडर हो रही है या वो भी उसके लिए अप्लाई करें। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी सजेशन है जो आई थिंक अंटारियो में और यूके के अंदर ऑलरेडी ये सिस्टम इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। सो ये वो ऐसे स्टेप्स हैं ये, और ऑफकोर्स इसके अलावा जो बाकी स्टडी में डॉक्यूमेंटेड है, some of those steps through which the constitutional and the legal amendments, आप of course pro women laws पास कर सकते हैं। मैटर्निटी के ऊपर हम कब से काम कर रहे हैं, मैटर्निटी लीव एंड बिल की अमेंडमेंट के ऊपर विमेन लॉ की टीम ने बहुत काम किया है, लेकिन हमें अभी तक उस बिल को आगे ले जाने का मौका नहीं मिला। Sahar has worked very hard on that, and Isa and Maheen, everybody has worked really hard on that, but we haven't really even had an audience and not a chance to take that forward. So so आईनी तरमीम, कानूनी तरमीम लाने से भी आप इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे वो तुम्हारे वही स्ट्रक्चरल इनविजिबल बैरियर्स थे जो हमें तो नज़र आते हैं पर हमारे मेल कॉलीग्स को नहीं होते। तो हमने कहा चलो एक स्टडी की सूरत में लेट्स प्रेजेंट देम, एंड आई एम गोना स्पेंड अ लिटिल मोर टाइम ऑन दीज बिकॉज ये थोड़े ज़्यादा लाइक लॉस्ट रहते हैं, लाइक पीपल डोंट रियली पीपल फील देम, दे लिव थ्रू देम, बट दे माइट नॉट really be able to put a finger on them. So discouragement from active legal practice किस किस को फेस करनी पड़ी
from the female law students if we have. Have you guys been discouraged from active legal practice ever? Yeah. There's lack of guidance and accessible information that is credible. यानी अगर आपने लाइसेंस भी अप्लाई करना है तो किस तरह करना है, कहाँ जाना है, किसके पास जाना है. अब तो कानूनदान की टीम को क्रेडिट दूंगी कि उनकी वजह से बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट दे मेड अवेलेबल, बट इवन देन ऑफिशियली तो वो चीज़ें अभी भी उस तरीके से प्रेजेंट नहीं है. सम एफर्ट्स हैव बीन मेड. मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ. खासतौर पे मोहम्मद अहमद क़यूम साहब को डेफिनेटली मैं क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने बहुत इसके ऊपर एफर्ट किया है, बट उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है. साथ ही ऑफ कोर्स विमेन हैव लैक ऑफ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़. फाइनेंशियल बैरियर्स और कंस्ट्रेंट्स होते हैं हमारे जो अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ में रिजल्ट करते हैं. हमारी जो लीगल एजुकेशन है उसमें बहुत गैप है बिटवीन लीगल एजुकेशन एंड द प्रैक्टिस. सेफ मोबिलिटी एंड ट्रैवल इज़ अ वेरी बिग फैक्टर. सेफ, और जो सोसाइटी में भी बात की वॉशरूम्स की, इस तरह की चीज़ों की, आई थिंक सना विल स्पीक मोर टू दैट. एंड देयर इज लैक ऑफ एनेबलिंग स्ट्रक्चर्स कि अगर आपने if you're nursing a child, daycares nahi hai, all of that. And then of course there's professional tribalism and influential role of de facto groups in the profession. And I might get a lot of flack for saying this, but we have this de facto powers within the profession that kind of gatekeep as to how far you can go in the profession. So all of these are very serious concerns for us as female legal professionals. Can we have the next slide? So these are some of the findings in terms of the measurable findings that we've had. You can take the time to go through them in the book also. But essentially, जो दो main factors है वो ये कि yes, there is a need for transparency. You have over 90% people supporting that idea that the appointments need to be more transparent. And should they be open to legal professionals from academia and other non-traditional career fields in law? Should they be application-based instead of nomination-based? So there's a lot of support for that as well. So these are the two prominent ones. Next slide, please. Yeah. This is just to give you a sketch of what the current state of people appointing and recruiting in the justice sector looks like. And if you see, all of these services, whether that's a subordinate judiciary, तो आपकी जो appointing authority है वो एक मेल है. Higher judiciary में CJL और High Court मेल है. Prosecution service में जो आपको appoint करते हैं, जिन्होंने recruit करना है वो मेल है. प्रोसिक्यूटर जनरल, पाकिस्तान बार काउंसिल, लॉ फर्म्स, ये सारे आप देख लें जो भी आपके जस्टिस सेक्टर के इंपॉर्टेंट की पोजीशंस हैं, उन सब में जो रिक्रूटमेंट है और अपॉइंटमेंट्स हैं, उन किसके हाथ में, या वो मेल डोमिनेटेड है या वो मेल इसके हाथ में. दिस इज वेयर वी स्टैंड. बार काउंसिल्स एक्चुअली बड़े इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड बिकॉज बहुत सारे लोग तो कहते हैं हम खवातीन को वोट ही नहीं डालेंगे, उससे बेहतर हम वोट ज़ाया करते हैं. बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब आप क्यों इलेक्शन में पार्टिसिपेट करिए, ये तो आपकी टर्फ ही नहीं है, आप यहाँ क्यों आ गई हैं. सो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें सुनने को मिले थे. बट इसके साथ साथ जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से अगर आप देखें तो देयर वाज एन अमेंडमेंट इन 2018 टू द लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट, जिसके अंदर एलिजिबिलिटी टू स्टैंड एज अ कैंडिडेट फॉर दीज बार इलेक्शंस को 5-5 साल से बढ़ा दिया गया. And that time period disproportionately impacted women because जो खवातीन जिनकी पहले 10 साल की प्रैक्टिस हो गई थी मुकम्मल या 2020 तक हो जाती, वो मज़ीद 5 साल या 3 साल पीछे धकेल दी गई और वो उनको अब 15 साल की प्रैक्टिस शो करनी थी फॉर देम टू इवन बी एलिजिबल टू स्टैंड एज अ कैंडिडेट. और ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर हमारे पास आप देख सकते हो कि लॉट्स ऑफ पीपल ने 86% of the people who responded agreed and accepted that those amendments in 2018 did impact disproportionately women in the 2020 election जो पंजाब बार काउंसिल का हुआ है. एंड इस तरह के लेजिस्लेटिव स्टेप्स में भी आप देखिए कि उस वक्त जो कानून साजी हो रही होती है तो वहाँ भी मेल डोमिनेटेड लोग ही बैठ के ये फैसले कर रहे होते हैं. एंड दे गिव इट अ वेरी नाइस प्रोडक्टिव कवर ऑफ कि इससे प्रोफेशन जो है उसमें सीनियर लोग आएंगे और बहुत हम ये प्रोफेशन के बेहतरी के लिए कर रहे हैं कि हम इसमें एक्सपीरियंस्ड लोग लेकर आ रहे हैं. बट दैट्स माई पॉइंट एग्जैक्टली कि यंग लोगों की रिप्रेजेंटेशन कहाँ है.
juniors की तरह represented हो रहे हैं, you know, so it's not just about women, it's also about the younger people. And why don't women then do it? जो structural barriers के context से देखें तो resources कम है, उनके पास lack of female role models उतनी नहीं है, and जो सबसे ज़्यादा important factor था the undue pressure and leg pulling from their own colleagues, जो उनको एक एटीट्यूड का सामना करना पड़ता है अपने मेल कॉलीग से, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है फॉर देम टू जस्ट बी डिसुएडेड. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू क्वेश्चन कि क्या ये डिस्करेजमेंट सिस्टेमिक है? इज इट बाय डिज़ाइन? इज इट देयर इंटेंशनली? क्या फैक्टर्स हैं इसके? तो दो फैक्टर्स सामने आए. एक ग्रुप ऑफ पीपल सेड दैट यू नो दिस इज एन अटेम्प्ट एट गेट कीपिंग, ये कॉम्पिटिशन को रिड्यूस करने के लिए वो करते हैं ताकि आप डर जाएं, पीछे हट जाएं. दूसरे लोगों का ये ख्याल था कि नहीं, ये बेसिकली स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जो उनकी पावर डोमिनेंस है. सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पावर रिलेशन दैट दे डोंट वांट, बिकॉज जिस तरह का ब्रदरहुड और ट्राइबलिज्म मेल कॉलीग्स आपस में एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, वो शायद खवातीन उन पोजीशंस में और उन रोल्स में आके रेसिप्रोकेट नहीं करेंगी. एंड दोज आर द फैक्टर्स व्हाई एज अ मैटर ऑफ डिज़ाइन. सो देयर इज अ मेथड टू द डिस्करेजमेंट. इफ एनीबडी इज डिस्करेजिंग यू, there is a method to it. There is a, you know, it's you have to, there could be something beyond the surface. It's not just to protect you कि वो criminal में मत जाओ because बड़ी hard field है. It could be कि वो status को maintain हो रहा है या वो competition reduce हो रहा है. It could be that. I'm not saying everybody does it for that reason, but there could be that reason. And it's alarming because अगर आप violence against women देखें, पंजाब कमीशन की भी रिपोर्ट देखें, तो वो केसेस बढ़ते जा रहे हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के. बहुत सारे फैमिली केसेस के अंदर इतने क्रिमिनल लॉ मैटर्स होते हैं, लेकिन प्रोसिक्यूटर्स फीमेल प्रोसिक्यूटर्स कितनी है? 12%. क्रिमिनल लॉ करने नहीं देते प्रैक्टिस या डिस्करेज करते हैं. सो लाइक व्हाट इज दिस? यू नो, on the one hand you have such rising cases of violence against women and you don't have enough people in the system to represent those who, I mean, in a context of fair representation. You don't have someone like you in those positions that you could go to. Next slide please. So ये वो सारा साइकिल है जो मैं बात कर रही थी कि सब कुछ इंटर रिलेटेड है. आपको अर्ली डिस्करेजमेंट मिलती है एट होम एंड स्कूल फ्रॉम एक्टिव लीगल प्रैक्टिस. आप नॉन प्रैक्टिसिंग रोल्स में चले जाते हैं, आपके पास प्रॉपर एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन नहीं है, उसकी वजह से आप लाइसेंस भी अप्लाई नहीं करते, आपकी रिपोर्टेड जजमेंट्स और रजिस्टर्ड अटेंडेंस एज काउंसिल्स इन कोर्ट्स नहीं होती पूरी, और जब तक ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आप पूरी नहीं करते आपको एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस नहीं मिलता. जब आपके पास ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं है कि आपकी हाजिरी कंप्लीट हो, आपका नाम एज काउंसिल, इतनी रिपोर्टेड जजमेंट्स आपके उसमें हो, तो आप प्रोफेशन में आगे यानी एज एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट या जज भी अगर आपने बनना है उसके लिए भी कंसिडर होना है, तो आप वो वाली अपॉर्चुनिटीज भी पीछे रह जाते हो. या अगर आपने बाहर के कैंडिडेट के लिए खड़े होना है या कुछ होना है तो वो सब कुछ पीछे रह जाता है, बिकॉज एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नहीं हो तो पाकिस्तान बार काउंसिल का एक्सेस नहीं मिलता आपको. सो ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है. And this is what it shows. It shows why law firms are important and what role they can play in women's advancement, not just in their own firms, but in the profession in general. So they need to give you the opportunity and exposure to go and argue the cases directly, not just make you do the desk work in the chambers or in the firm, because then that's not getting counted for in your professional growth. Secondly, it shows the impact of technical requirements and how they can contribute to the gatekeeping, how they can actually go against your advancement and make sure कि ऊपर जो है वो फिर आदमी ही आ गए, बिकॉज वो तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स मीट कर जाएंगे, उनके पास तो उतनी रिपोर्टेड जजमेंट्स होंगी, उनके पास तो उतनी अटेंडेंस होगी शो करने के लिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस के लिए भी आपसे पहले अप्लाई करेंगे एंड एज अ रिजल्ट पाकिस्तान बार काउंसिल में भी वोट कर सकेंगे या एज अ कैंडिडेट खड़े हो सकेंगे. सो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो ये बेसिकली हमने जो अभी सारी बात की है ये उसका निचोड़ है कि ये वो फैक्टर्स हैं जो बार काउंसिल के इलेक्शंस, लॉ फर्म्स, जुडिशरी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है और ये वो फैक्टर्स हैं जो हमें वहाँ तक लेके जाते हैं. सो वुमेन बेसिकली हैव अरेस्टेड डेवलपमेंट, अरेस्टेड प्रोग्रेशन होती है उनकी. कदम कदम पे उनको ऐसे सिस्टेमिकली इंगेज कर दिया जाता है कि वो काम भी कर रही है लेकिन वो किसी खाते नहीं जा रहा है. एंड दैट्स व्हाट द बिगेस्ट ट्रेजेडी इज एसेंशियली. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो लॉ फर्म्स के बारे में थोड़ी और बात करने की ज़रूरत है क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पे लॉ फर्म्स बिल्कुल भी
भी regulated नहीं है. We all know that they're mostly partnerships, and the Bar Council doesn't really regulate them or has any rules to regulate them. And by regulation I mean not just के litigants के context के अंदर, but also in terms of जो हमारी अपनी टाइमिंग्स है या वर्क एथिक है, एंड एक ह्यूमन रिसोर्सेज के एंगल से भी अगर आप देखें. सो फर्म्स आर नॉट रेगुलेटेड इवन दो आपका जो सेक्शन 56M है लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स एक्ट का, that empowers the provincial bars to make rules to provide for the formation and regulation of firm of lawyers by notification in official gazette, but ऐसा उस तरह से हो नहीं रहा in practice. So that is why जब हमने बात की तो हमें पता लगा कोई फॉर्मल रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ नहीं है, 91% सेट कि नहीं है. कोई क्लियर प्रोग्रेशन रूट्स क्या आपकी फर्म्स ऑफर करती हैं, आपको बताती हैं कि आप इतने साल ये करेंगे तो आप यूँ एडवांस करेंगे प्रोफेशन के अंदर. तो उसमें भी 86% सेट नो क्या वेबसाइट की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है रिक्रूटमेंट की, इक्वल अपॉर्चुनिटी की, प्रोग्रेशन रूट्स की. तो जितनी वेबसाइट हमने सर्वे की उनमें से सिर्फ 15% वेबसाइट के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन मेंशन थी, बट वी डोंट नो कि वो फॉलो होती है इन प्रैक्टिस के नहीं. तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इस तरह के सामने आए कि जहाँ पे हमारे पास फर्म्स के हवाले से अभी तक बहुत ज़्यादा कंक्लूजन इसके बहुत आर्बिट्ररी और बहुत फर्म टू फर्म बेस करता है कि किस तरह का एनवायरनमेंट होगा, and there is no sort of regulatory authority. And as opposed to this, in the UK, you have the regulatory bodies regulating these aspects of law firms as well. So not just the lawyers, but the law firm itself needs to be registered or regulated by these bodies. But regulation by Bar Council is such a far cry because we all have heard of the term regulatory capture. तो जब तक बार का रेगुलेटरी और रिप्रेजेंटेटिव रोल को बाइफिकेट नहीं किया जाता और उसको अलहदा नहीं किया जाता, तब तक जिनसे आप वोट मांगते हो उन्हीं को आप रेगुलेट करने की बात करोगे तो दैट्स नॉट हैपनिंग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अच्छा, ये सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट था. बहुत सारी मिथ्स हमने बस्ट की, 2-3 जल्दी से बता देती हूँ. कहा जाता है कि जी ख़वातीन जो है वो क्रिमिनल लॉ में सर्वाइव नहीं करेंगी या वो कैसे करेंगी, ये उनके लिए फील्ड नहीं है. तो देयर इज़ नो डेटा to suggest that that is true. In fact, there is evidence to the contrary. What our data tells us is that when women are in leadership positions, more female associates join the firms, regardless of the area of practice. And we have 3 law firms, essentially, जिसके अंदर हमें ये चीज़ नजर आई. हुमा लॉ एसोसिएट्स रावलपिंडी इस्लामाबाद में 8 फीमेल एसोसिएट्स हैं, जो हेड है वो भी खुद फीमेल है और सारी की सारी ख़वातीन हैं, सारी की सारी क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करती हैं, फैमिली लॉ में प्रैक्टिस करती हैं. AGHS is another example. You have females sitting on the top, you have more female employees and you have them working in all sorts of areas. Ms. Rubina Shahin इधर मौजूद है, वो लॉयर तो नहीं है लेकिन वो लीगल ऑफिसर के तौर पे जेलों में भी जाती है, सारा काम. तो आसमा जंगीज़ लॉ फर्म इज अ ग्रेट एग्जाम्पल. And more recently, Asma Ahmed Law Associates has a lot of female associates joining, and there is no there's no sort of bifurcation कि फीमेल है तो क्रिमिनल काम नहीं करेगी या सिविल काम करेगी खाली. So there's all sorts of work, but one phenomena that we realized was that इन सारी firms के अंदर common चीज़ क्या है कि you have a female in a leadership position, and because of that जो नीचे भी आपकी associates हैं वो भी ज़्यादा है, they outnumber the male counterparts and they're doing all types of work that the firm is doing, whether that's criminal, whether that's civil. So ये एक myth है कि ख़वातीन. And then of course Sara Milan, such a big name as far as Justice Project Pakistan को आप देख लें, Nikat herself as far as cyber laws are concerned, you have such specialized work in criminal fields, in cyber crime, in all these specialized areas that women are leading. IP के अंदर women are leading. IP क्राइम्स होते हैं, वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं. सो ये एक मिथ है कि ख़वातीन ये काम नहीं कर सकती. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. देयर इज अनदर मिथ व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वुमेन लैक इंटरेस्ट इन द प्रोफेशन. नहीं पिछली वाली सॉरी दिस इज़ वन पॉइंट दैट आई ऑल्सो वांटेड टू टॉक अबाउट कि लॉ फर्म्स के अक्सर ये होता है कि दे लुक डाउन अपॉन वुमेन एसोसिएट्स कि जी ये तो लाइबिलिटी है, ये तो 2 साल बाद चली जाएंगी, शादी हो जाएगी, इनका तो टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, ब्ला ब्ला ब्ला. बट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि उसी लॉ फर्म में मेल एसोसिएट्स भी छोड़ के जाते हैं, बट देयर मोबिलिटी
from that firm is looked upon positively as upward mobility and it is not penalized or held against their gender. तो अगर एक मेल एसोसिएट एक फर्म को छोड़ के जाता है तो वो पॉजिटिवली व्यू करते हैं उसको बिकॉज वो अपनी प्रैक्टिस फॉर एग्जांपल शुरू कर रहा है तो वाह ये तो बहुत अच्छी बात है. बट उसी फर्म में से खातून जाएगी अपनी किसी मैरिज की वजह से या बच्चे की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, तो उस चीज़ को नेगेटिवली व्यू किया जाता है इवन इफ इट इज़ टेम्पररी, इवन इफ शी प्लान्स टू कम बैक टू प्रैक्टिस, बट दैट काइंड ऑफ मोबिलिटी इज लुक्ड डाउन अपॉन एज अ लाइबिलिटी. सो ये भी एक फैक्टर है जो प्रिवेल करता है. बट मेरा सवाल ये था कि उस लॉ फर्म के लिए तो दोनों छोड़ के चले गए ना. उस लॉ फर्म के लिए तो मेल एसोसिएट ने भी क्विट की जॉब और फीमेल ने भी की, लेकिन मेल एसोसिएट का क्विट करना उसके जेंडर के अगेंस्ट नहीं होल्ड अगेंस्ट होगा, लेकिन फीमेल का होगा और उसकी वजह से मज़ीद ख़वातीन को नौकरी मिलने में ज़्यादा मुश्किल होगी. सो दिस इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड इनविजिबल बैरियर एज वेल. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. या एंड द फाइनल मिथ कि जी ख़वातीन तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो तो लिटिगेशन नहीं करना चाहती, वो जज नहीं बनना चाहती. द डेटा इज़ प्रीटी कॉन्ट्ररी टू ऑल ऑफ दैट. So we asked women about whether they fear or whether they've experienced some form of harassment or unprofessional behavior in courts. 95% of them said yes. And despite that, when we asked them, do you contemplate to quitting law at any stage, 75% of them disagree. Do you intend to pursue litigation? 74% of them said yes. So despite 95% of them facing harassment or unprofessional behavior, roughly 75% of them agree that they still don't want to quit and they still want to continue litigation and they still want to apply for judiciary. Do you want a career in judiciary? 79% of them said yes. So, where is the interest lacking then, if this is the data? Next slide, please. Prosecution service emerged as an area जहाँ पे information का डर सबसे ज़्यादा था, यानी सबसे कम लोगों को प्रोसिक्यूशन सर्विस के हवाले से मालूमात थी. एंड दैट इज़ वाई एक ये बहुत बड़ा गैप है. इसमें अगर हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल बनाएंगे सो मे बी विल हैव मोर प्रोसिक्यूटर्स हु आर वुमेन. हिना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आई मीन really honored that you're here and you're giving us the time to listen to our findings. I will have you say a few words just after this. So वही वाली बात अगेन कि इतने राइजिंग इंस्टेंसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, तो उसमें ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है प्रोसिक्यूशन का कि इसमें ख़वातीन को ज़्यादा इंगेज करने की बहुत ज़रूरत है. और मेरी रिक्वेस्ट है टू लॉ फर्म्स कि वो प्रोसिक्यूशन अथॉरिटीज़ के साथ मिल के ऐसी वर्कशॉप्स डेवलप करें और इस इंफॉर्मेशन को अपने स्टूडेंट्स तक लेकर आएँ. लास्ट स्लाइड. या दीज आर माई कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस. तो हमने अभी तक ख़वातीन के एंगल से बात की, लेकिन जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं वो इससे ब्रॉडर है. हमने ये रियलाइज़ किया कि जो हमारी स्ट्रगल है प्रोफेशन के अंदर, टाइमिंग्स रेगुलेटेड हो कि हमें अच्छे बाथरूम मिल जाए, हमें अच्छे क्या चलो एक सेपरेट बाथरूम भी मिल जाए, या हमें प्रॉपर हमारा वर्क एथिक रेगुलेटेड हो, सारा कुछ एक डिसेंट कल्चर हो, हमें कोई हरास ना करे. ये सब एक जेंडर स्ट्रगल के साथ साथ इट इज़ एक्चुअली अ स्ट्रगल फॉर डिसेंट वर्क एंड बेसिक राइट्स जो कि अज़ल से चलती आ रही है. सो ये एक वर्कर्स राइट्स मूवमेंट भी है विद इन द लीगल प्रोफेशन विच हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट since beginning. Then one of the observations is that proximity matters a lot. So जो lawyers हमारे प्रोविंशियल हाई कोर्ट की विसिनिटी से दूर थे, यानी जो रावलपिंडी में प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल था जज साहब के साथ एक लिंक बनाना, उनके कोर्ट में हाजिर होना और इस लेवल पे पहुंचना कि वो कल को जब नॉमिनेशंस हों जुडिशरी की तो उनको याद हो कि आप भी एक वकील हैं. क्योंकि जब आप उनके सामने पेश नहीं हो रहे या आप एक फॉर एग्जांपल लोअर कोर्ट्स में ही अपेयर हो रहे हैं और हाई कोर्ट में आपकी प्रैक्टिस नहीं है एज सच, तो आपकी जजमेंट्स भी रिपोर्ट नहीं हो रही. सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स, सो द फर्दर यू आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पर्सन हु इज सपोज्ड टू नॉमिनेट और रिक्रूट यू, द मोर डिफिकल्ट इट इज़ गोइंग टू बी फॉर यू टू कम फॉरवर्ड. प्रॉक्सिमिटी मैटर्स. Female respondents, they showed a strong inclination to learn and participate in workshops, and they were more inclined to offer pro bono services as well. कि हम अगर मौका मिलेगा तो हम आगे से फिर जस्टिस के लिए काम करेंगे, ख़वातीन को प्रो बोनो या और भी मार्जिनलाइज ग्रुप्स को अपनी सर्विसेज फ्री में देंगे. वी वांट टू डू दिस बिकॉज इट्स अ नोबल प्रोफेशन. इसमें जस्टिस है, इसमें हम राइट्स की बात करते हैं. सो लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स वर वुमेन
were inclined to offer pro bono services. And finally, technology has the potential to address some of these barriers. So अगर हम legal और justice sector के अंदर technology infuse करेंगे, we will be able to overcome some of these barriers as well. Recommendations हमारी study में page 65 onwards है, आप उसको refer कर सकते हैं. लेकिन कुछ वे फॉरवर्ड में आपके लिए यहाँ छोड़ना चाहूँगी कि हम डिफरेंट लेवल्स के ऊपर सारे क्या कर सकते हैं. लॉ रिफॉर्म्स विद जेंडर लेंस, कि हमारी जो पॉलिसी बने, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो, जो कानून बने, वो एक जेंडर लेंस यानी एक लेंस ऑफ इंक्लूजन और अफर्मेटिव एक्शन और आर्टिकल 25 जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स का, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर एंड स्पेशली आर्टिकल 34 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन नेशनल लाइफ को जो यकीनी बनाता है, उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर लॉ रिफॉर्म्स होने चाहिए. यानी उसको एज ए प्रिंसिपल रख के आपको लॉ रिफॉर्म जो है सब करना चाहिए. फिर आप फीमेल लॉयर्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए, उनको फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेस करके, बिकॉज इलेक्शंस में भी बहुत पैसा लगता है, देयर इज नो फंड, देयर इज नो उनकी इंडिविजुअल प्राइवेट प्रैक्टिस किस तरह से आप उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं. Investment in enabling infrastructure, ramps, washrooms, वो Sana is going to talk about more, and invest in specialized, co-working spaces. You can address the information gaps by जो जस्टिस आयशा भी बात करी थी कि डेटा आपके पास होना चाहिए सबसे पहले पॉलिसी को रिफॉर्म करने के लिए. कुछ हमने किया है, कुछ और लोग भी करें इसके ऊपर काम. So we need to have that data. We can develop toolkits for women to excel. We can digitize the justice sector. We can run media campaigns. And finally, bar councils और law schools भी इन सब में से कुछ कर सकते हैं to bridge the gap जो है knowledge deficit जो है. बट बार councils और भी बहुत कुछ कर सकते हैं. वो अपने regulatory और representative roles को सबसे पहले segregate करना चाहिए. Graduate placement program शुरू कर सकते हैं. They can facilitate women for bar elections through mobility and inclusion, कि वो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करें ताकि खवातीन भी जाके अपनी कैंपेनिंग दूसरी सिटीज़ में कर सकें. एंड दे कैन कलेक्ट एंड मेक अवेलेबल डेटा फॉर रिसर्च एज वेल, क्योंकि बार काउंसिल्स आर प्लेस्ड इन अ पोजीशन कि वो जैसे लॉ स्कूल्स का डेटा नहीं है. मैंने उनको बड़े खत लिखे कि प्लीज़ आप लॉ स्कूल से ये डेटा मंगवाएं, लेकिन अभी तक उस पर कोई हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला. सो आखिर में आई वॉन्ट टू थैंक द टीम एंड द वॉलंटियर्स कि ये सारी जो रिसर्च है, फाइंडिंग्स है, ये इन लोगों के बगैर पॉसिबल नहीं थी. एंड वट एवर यू सीन टुडे इज द हार्ड वर्क एंड रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ईच वन ऑफ दीज इंडिविजुअल्स एंड मोर जो बिहाइंड द सीन्स हैं, जो यहाँ पे आज नहीं है. उन सबको और आप सबको जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया सर्वे में, a big thank you. I'm honored because आपके बगैर ये पॉसिबल नहीं था. Thank you so much each one of you.